तअज्जुब की बात है कि कुरान के नज़दीक ट्रिनिटी का मतलब है मरियम, गॉड और ईसा, जबकि क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का में मरियम इंक्लूड नहीं होती, उसमें जिब्रील इंक्लूड होता है। ये यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक है इनकी। शुभम जी, आप अपना धर्म में पढ़िए ना, दूसरों के धर्म में क्यों टांग डालते हो? ये कुरान एक्सपर्ट शुभम जी एक सेटिंग किया हुआ है, वो जो कुछ भी बोलता है कुरान एक्सपर्ट उसको बिल्कुल बिल्कुल हाँ 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 बोलकर वो साबित करने की कोशिश करता है। ये कुरान में, इस्लाम में ट्रिनिटी नहीं है, तीन खुदा नहीं है, एक ही खुदा है। कुरान का बेसिस ही एक खुदा है, उसको तौहीद कहते हैं। 1/3 ऑफ द कुरान इज तौहीद। कुरान का जो मेन ये है वही तौहीद है। इसको ये शुभम बोलता है कुरान में ट्रिनिटी है, क्योंकि इसमें तीन जिक्र आया है। मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में एक जगह जिक्र आ गया है, वो अल्लाह ताला कुरान की आयत है, उसमें इस तरह से ट्रिनिटी आ गया है, इस तरह से बोलता है शुभम। वो आप अपना धर्म पढ़िए ना, आपका धर्म किस हाल पर है, वो छोड़कर दूसरे के धर्म में हर दिन टांग डालते हो। ये लोग है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, इतना बड़ा बहुत बड़ा, ये 10 15 20 आदमी इसी में काम दिन रात लगा हुआ है। दिन रात इस्लाम के पीछे कुछ बोलना है, ऐसा गुमराही फैलना है, इसी में लगा हुआ है। कल परसों एक बुढ़ा, जिया हशाम का नामी एक बुढ़ा, उसका उम्र बोलता है 97 ईयर्स, वो बोलता है मैं खुदा को देखने से ही ईमान लाऊंगा। अरे 97 ईयर्स में तुम खुदा को देखोगे नहीं, तुम खुद खुदा के पास चले जाओगे। कितना दिन में? 97 ईयर्स में वो खुदा को देखना मांगता है, वो खुदा को देखना नहीं पड़ेगा, तुम ही चले जाओगे। कितना लोग इसके पीछे पड़ा हुआ है, इस्लाम के पीछे। इस्लाम के पीछे आप ये गलत गलत बोलोगे ना, इतना इस्लाम ऊंचा उड़ेगा। उस इस्लाम को चैलेंज कबूल है, इस्लाम बहुत बड़ा ऊंचा मजहब है। अब दिन रात इसके 15-20 आदमी चैनल खोल खोल कर इस्लाम के खिलाफ गुमराही फैलाते हो। अब दूसरा काम नहीं है आप लोगों को। कितना बड़ा नेटवर्क है आप लोग का, पता नहीं। ये है ना, जितना अगेंस्ट बोलेगी इतना इस्लाम में अभी और ऊंचा उड़ेगा। देखिए सर आइजैक न्यूटन बहुत बड़ा साइंसदान था 1667 का, वो इस्लाम में अकीदा रखता था, वो ट्रिनिटी में नहीं अकीदा रखता था। कितना ये बात बोलनी चाहिए। देखिए एक शेर है इसका, तू समझता है जो हवादिस हैं सताने के लिए, ये हुआ करते ही जाहिर आजमाने के लिए। तूंदे बादे मुखालिफ से न घबराए आए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये ख्वाब बोलते हैं गरुड़ा, चील को बोलते हैं, वो इतना ऊपर उड़ेगा जितना हवा चलेगी। इसी तरह फ्लाइट में जब ऊंचा जाता है ना, हवा जोर से मारेगी, डायनो में गर्म होगा, डायनामो में टर्बाइन में, और पीछे जाएगा, फ्लाइट ऊंचा उड़ेगा। इस तरह इस्लाम ऊंचा उड़ेगा। Do you realize that Newton could have been condemned to death or imprisonment as Galilei before him? And he would have had to abjure his own scientific research. He would have had to do that had he spoken out and expressed his convictions. At the time, this was considered a crime liable to capital punishment. Newton believed that the concept of the Trinity is insupportable. He had to face problems because of his belief. When Newton joined Trinity College at the University of Cambridge, he was required to take orders and be ordained as a priest. But he continued to put this off indefinitely. When he was selected for the Lucasian chair, he requested a personal appeal to King Charles II, requesting that he be exempted from this requirement because he did not believe in the Trinity. Plainly put, Newton believed in the one God. Amazingly, his concept of God and Jesus was close to the Islamic concept. His biographer, Richard Westphal, writes, Newton recognized Christ as a divine mediator between God and man who was subordinate to the Father who created him. Newton then considered Jesus an intermediary between God and man, and that he was subject to his Creator. Indeed, God's messengers have such intermediate roles between God and his creation, and they are subject to God's will like all creatures. Newton followed Arius, who was a Unitarian, and rejected Athanasius, who believed in the Trinity. Newton believed in an omnipotent and omniscient God. Newton says in his 12 Articles on Religion, published around 1710, this most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. There is one God, the Father, ever-living, omnipresent, omniscient, almighty, the maker of heaven and earth, and one mediator between God and man,
That man is Christ Jesus. We are to return thanks to the Father alone for creating us and giving us food and raiment and other blessings. Newton studied the gospel more than he studied any other thing, and he arrived at the conclusion that numerous texts were introduced and inserted into the gospel asserting the divinity of Jesus Christ. These texts were not part of the gospel before. The Islamic belief that is stated by God in the Quran, the only true faith acceptable to God is man's self-surrender to Him, and it's the message of all messengers and prophets, Adam, Noah, Moses, Jesus, and Muhammad. It's one message from God. Newton came very close to this idea when he said, "The first religion was the most rational of all others, till the nation